So as promised, this बात जरा boring सा है वो मॉर्निंग वाला जरा theoretical था ये वाला थोड़ा सा उस काम की बातें हैं specifics चीजें हैं जो कि हमने देखनी है so it doesn't have a lot of theory. The idea is just to learn a little bit about classification systems that are there for journals. So we'll have a look at it from the international perspective, and we'll also look at it from our own localized perspective as well. So there might be some journals which are excellent in the international level and they can get you promoted. But if you get published in those journals locally, then the AGC doesn't even want to give you any credit for it because they don't fulfill certain criteria that the AGC has come up with. So it's a very different ball game. And I think इसको हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं ये विटकिंस थीसिस सबमिट किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और बर्ट्रैंड रसल जो था उसका एग्जामिनर था रसल ने लिखा कि ये जो थीसिस है ना इसने फिलॉसफी की बुनियादें हिला दी हैं और फिलॉसफी को एक नई डायरेक्शन में लेके चला गया एंड इट इज गुड इनफ फॉर द अवार्ड ऑफ एजुकेशन. तो पाकिस्तान में ये चक्कर है कि things might be shaking the mountains in the world. It isn't good enough for the Pakistani system. So there might be very good researchers abroad who have a lot of publications. लेकिन आप उनको पाकिस्तान में ले आए तो वो जो है लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जाने वाले हैं और यहाँ पे बहुत से प्रोफेसर हजरात हैं जिनको मेरे ख्याल से आप पब्लिक में दिखाना ही नहीं पसंद करेंगे because publications they would have would be an embarrassment to anybody on a local arena. So it's a completely different competition. It's a completely different ball game. What we've got going on locally is entirely different than what is going on in the global stage. तो हम दोनों को थोड़ा सा देखना पसंद करेंगे. मेरा कोई इस तरह का पर्सनल वेंडेटा नहीं है कि पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर हम कोई मौकरी करें और उसका कोई मजाक बनाए. But we just need to understand कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है
Plus, we need to come up with some sort of a best practice for ourselves as well. थोड़ी सी जो मैंने आप लोगों की गुफ्तगू सुनी वो यही थी कि यार किसी के साथ धोखा हो गया, किसी ने पैसे दे दिए, किसी ने बड़े पैसे डूब गए, बड़ा वक्त ज़ाया हो गया, because people ended up publishing in certain outlets which turned out to be the improper outlets to go for. So इतना आप एफर्ट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उससे अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छी बात होगी. आपके सामने अली भी आए, मैं भी आया, हम पूरी एक दुखी दास्तान है. आप हम सबको बैठाएं तो हम बहुत बड़ी दुखी दास्तान है. बहुत से पर्चे हमने लिखे लोकल जर्नल्स में which were somehow okay, but then suddenly some new rules and policies came out, and then our publications were suddenly equated to be of no value whatsoever. तो 33 के करीब पर्चे हैं जो मेरे ज़ाया हो चुके हैं, 23 के करीब किसी और के ज़ाया हैं. तो ये वो ज़माना था जिस टाइम पे हम सीख रहे थे कि होते क्या है और ये लिखा कैसे जाता है. तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे जब हमने कोई पब्लिकेशन की होती थी, and then suddenly a few years later down the line we get to know that best effort that we had done amounted to absolutely nothing. Now the problem is that they are published. So I can't even go back to my effort and say, okay, I would like to reclaim it and put it in a new journal and get to be of some credit or some value for myself. So ये खैर अपनी जगह पे कहानी चलती रहती है. But we want to look at journal classification. Agenda हमारा क्या है? यही है that we want to look at the new systems, what's going on abroad, what's going on locally. We want to look at the classification system so that we can make better decisions. And we also want to look at this other new thing that's going on, which is the categorization, the classification system for books that is in the works. Political वो चलता रहता है, powers to be, and every time we have a new HEC chairman, new things end up happening. So this is what was going on at the time of the Nuri Saab when he was not yet thrown out of the HEC. Now I don't know what's going to happen to it, but that's a draft version of journals and what would happen to it. अभी तक वो approved नहीं हुआ. In that draft version, there is a mention of categorization of books and possibly book chapters. So we are थोड़ा सा देखते हैं. But if you look at categorization, it's a very simple process, to be very honest with you. Most of the categorizations that exist out there are categorizing journals into 4 different quadrants: Q1, Q2, Q3, and Q4. अब आपकी मर्जी, आप उसको 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, 4, 3, 2, 1 कहते हैं, Q1, Q2, Q3 कहते हैं, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star कहते हैं. I don't know what you want to call it, but safe to say certain journals are up here, other journals are down. That doesn't mean the one that is down here is not a good journal or it's a useless journal. Many people are publishing in those. And many people are citing those works and they are using them when they are publishing their own work. Certain journals are sort of up there. And if you happen to get a paper into them, it's a very big deal. Certain journals have extremely high impact factors, such as the Nature Journal and such as the Science Journal. And many people get promoted to the professor category just because they happen to get published in those journals. Now, आप तो खैर physical sciences वाले हैं नहीं. तो हमारे लिए कुछ journals हैं, for example, the Academy of Management Journal. It's a very top class journal. Management Science Quarterly is a very top class journal. So if we somehow were, to end up living a different life and we were living in the US or Canada or Europe or something like that, but we ended up publishing in one of these journals, then we could actually go from nothing to being high-class professors in world-ranking universities. Right? But if you live in Pakistan, you get one article published in the Academy of Management, so you still have 9 more to do
in order to get to the next level of being an associate professor. And then you can do 5 more Academy of Management, Management Science Quarterly of something, organizational behavior papers, and then you can get to the professor category, right? So nobody is looking at कि आपकी जो publication की quality है वो क्या है और आपकी publication ने दुनिया को कितना हिला दिया है, उसका impact क्या है, उसको कोई नहीं देख रहा. Unfortunately, Pakistan is a total numbers game, okay? और ये आप भी इसमें शामिल हैं. आप खुद भी ये नंबर गेम खेलते हैं. If you've got children, आप परेशान बैठे होते हैं कि ये फर्स्ट आया है कि सेकंड आया है, थर्ड आया है कि फोर्थ आया है, राइट? मेरे बच्चे उसमें पढ़ते हैं ये ओ लेवल वाले सिस्टम में. तो मेरे साथ एक प्रोफेसर साहब खड़े होते थे गेट में बच्चों को पिक करने के लिए, और मैं बच्चों के पीछे आया होता था. मैम वो बड़ा परेशान होता था कि उसकी बेटी अब क्लास में फर्स्ट आई है कि सेकंड आई है. मेरी बेटी की क्लास पहले थी, तो उसको मैं कहता था कि जाहिर हूँ कैट्स, बच्चा सीख रहा है, खुश है, सुबह रो नहीं रहा है और खुशी से आ रहा है और इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है. दैट्स फॉर मी काउंट्स. लेकिन for Zayed it was such a big deal that he took the kid out of the school and put it in a school which declares के first कौन है, second कौन है, third कौन है, right? So ये हम बचपन से खेल रहे हैं, आप भी कर रहे हो. आपके सामने आपकी कजन के नंबर दिखाए जाते थे कि और करना सर समीना ने क्या किया और आपने क्या किया. So this is the numbers game, and Pakistan has their total numbers game, so which is quite alright. Sir, don't you feel that this number game should be changed? भाई मेरी फीलिंग्स से क्या, ठीक है ना सर, मेरी छोटी सी गुफ्तगू से क्या, ये तो पूरी कॉम बोलेगी ना कि नंबर्स गेम नहीं खेली तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे. मेरी बातों से क्या. So, but yeah, definitely I don't agree with the numbers game. I'm not in favor of it, but that's the game. So if that is the game, then you need to be the player. And if that is the game, you need to play the game. Otherwise, आप आगे नहीं जाने वाले. सर पंजाब असेंबली नंबर गेम शुरू हो. सर हर जगह तो आप अगर नहीं खेलना चाह रहे नंबर्स गेम, आप जो है कोई सेंस ऑफ मोरालिटी रख के बैठ गए हैं, कोई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट रख के बैठ गए, तो क्वाइट सून यूल फाइंड के अजीब अजीब से लोग आपसे 10 गज आगे निकल के और फिर आपके ऊपर बैठ जाएंगे और आपको सीनियरिटी दिखाएंगे और आपको कहेंगे कि देखें मेरे तो इतने पर्चे और मेरे तो वो कहानी, राइट? So last year board ने ये गेम खेला था नंबर गेम. हाँ एग्जैक्टली. 1100 में से 1111. जी ये हर जगह है. Sir, for that we have female student, she got 1100. Ten out of 1100. कोहॉर्ट बोर्ड सर, आजकल स्कूल के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसमें खास तौर पे मेंशन होता है कि अपना हाल है. सर देखिए, अब लड़कियों को 10 नंबर खूबसूरती का रिजल्ट है. अच्छा जी सर. Outcome of this is that they are, I think, going for again centralizing all these boards. So to measure the students at a singular. सर एक्सपेरिमेंटेशन है, हर वक्त ही एक्सपेरिमेंटेशन चलती रहती है, डिसाइसिव एक्शंस नहीं है, ठीक है ना. वो हमारे पास मैनेजमेंट है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है. लीडरशिप चेंज लेके आती है, अच्छा चेंज करके आती है, और लीडर का हमेशा जो है एक अनसर्टन सिचुएशन में बड़ा डिसाइसिव एक्शन होता है. लीडर किसी रग से खून निकल रहा है तो हेड सर्जन जो है वहाँ पे ओ माय गॉड चीखें नहीं मार रहा है. हेड सर्जन बड़े आराम से वो उठाता है, आर्टरी फोर्सेप उठा के आर्टरी को ब्लॉक करके उसको सूचर करके उससे आर्टरी फोर्सेप उतार देता है. उसके ऊपर कोई कयामत नहीं आई होती है, because the system is there. That's the leader, right? So we need leadership for that. Another story. Distract कर दिया. ज़्यादा बातें ना करें, फिर मेरा chain of thought. Excuse me, sir. There are some Q1 journals, right? And we are discussing that if impact factor is high, okay. Usually in Pakistan, people we are, but there are some Q1 journals where impact factor is low, but they are still Q1 journals. Yeah, sure. Because they are highly selective. They are not publishing everything. They are very selective, and they are decisively choosing कि publish क्या करना है और इसका मकसद ये कुछ greater goodness create कर रहा है, इसमें कोई value है कि नहीं. So
इम्पैक्ट फैक्टर आप अपना बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। जर्नल जो आपके पुअर क्वालिटी जर्नल्स होंगे वो ये देखना चाहते हैं कि आपने उनके जर्नल में पब्लिश्ड कितने आर्टिकल्स को साइट किया। So one way to get published in a journal is to prepare a manuscript specifically for that journal, and then make sure that you cite a couple of articles from that journal, because वो आपको इस तरह देख रहे हैं ना कि मैं तो तुम्हें पब्लिकेशन का एवेन्यू दे रहा हूँ, तुम मुझे क्या रिटर्न कर रहे हो ना। I scratch your back, you scratch my back, mi casa है su casa, right? So वो छोड़े, right? So is that right? Is that how we should go about doing it? बहुत अच्छी क्वालिटी के जो जर्नल्स हैं वो आपको ये नहीं कह रहे कि प्लीज साइट करो, लेकिन अगर आपने उन जर्नल्स के अंदर जो प्रोडक्ट पब्लिश्ड है उसको साइट ना किया तो फिर तो आप उस स्टेट ऑफ द आर्ट या वो जो इम्पोर्टेंट बाबे हैं उनके काम को नहीं लेके आ रहे, तो देयर द थिंग इज सॉर्ट ऑफ दैट। सो इम्पैक्ट फैक्टर इज सॉर्ट ऑफ वन मेजरमेंट, ठीक है ना। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव पर क्या होगा, दूसरा ये होगा कि सिलेक्टिविटी उसकी क्या है। हाउ सिलेक्टिव इज दैट जर्नल, क्या वो हर एरे का काम उठा रहा है कि नहीं वो देख रहा है। प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप अब पेपर लिख के भेजे ना, तो जी आप यहाँ पे वो शहीद यूनिवर्सिटीज वाले बहुत है ना, फलाना है SBB डिंगाना है, तो जी ये SBB फलाने से हैं, वो SBB डिंगाना इनको ऑथर साथ में जी सलीम गुल फ्रॉम लाइफ साइंसेज हमने भेज दिया टू द एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा पेपर होगा, सब कुछ होगा, इट प्रॉब्ली गेट रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज आप कौन, मैं कौन, ये कौन, ये लोग हैं कौन, और ये आई एम साइंसेस क्या बला है, और ये SBB क्या चीज होता है, और ये पाकिस्तान से है। सो देयर्स ऑलरेडी समथिंग गोइंग अगेंस्ट अस। अपने आप को आपने प्रमोट करना है तो आप किसी के साथ लिंक बनाइए जो कि सफेद नाम भी हो उसका और वो किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में भी हो, तो फिर आप वही चीज भेजेंगे तो it will be looked at in a much more favorable manner. You see, so there's a lot of politics behind the scene as well. ऐसे हुआ कि मैं एक बुक चैप्टर लिखने का शौक रखा हुआ था मैंने, तो मैं लिखा था उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो सर्चिंग करते 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 मुझे कुछ मवाद मिला, कुछ अच्छी चीजें मिली, उसमें से एक बड़ा कमजोर सा चैप्टर था लेकिन उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी जो कि आई थॉट दैट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन वो गूगल डॉक्स के ऊपर, सो बंच ऑफ पेजेस वर मिसिंग। तो मैंने क्या किया कि वो बंदे को सर्च किया, जो ऑथर था उसको मैंने ईमेल की, तो उसको मैंने कहा कि यार इस तरह आपका चैप्टर वैप्टर मैं यूज कर रहा था, गुड कन्वर्सेशन एंड दैट, लेकिन certain number of pages are missing, so would you mind if you share the chapter with me and I would love to read it। तो उसने मुझे कुछ दिन के बाद रिप्लाई की कि यार वो तो मैंने बहुत पहले लिखा था टाइपराइटर के ऊपर, so there is no soft file of it, लेकिन अगर आप मुझे अपना एड्रेस दे दें तो I will mail it to you। यार जन्नत नसीब करें, ये तो मेरा like I would be obliged। So he sent me the photocopy version of that typewritten document। तो उसको मैंने और यूज किया, फिर मैंने यूं किया कि उस बंदे को मैंने वापस ईमेल की, मैंने कहा पता है क्या, तुम्हारे इसमें से मैं बहुत चीजें ले रहा हूँ, वुड यू लाइक टू बी अ को-ऑथर विद मी ऑन दिस चैप्टर। तो उसने कहा तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ रहा हूँ, तुम उसमें कोई केस डाल सकते हो, कुछ तुमने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तुमने जिक्र किया है ना कि you went and talked to chief executives, you did this and you did that, तो can you put a business case in there, a real life case। कहता है मैं कर लूँगा। we shared, he put his case and sent it back। खाना खराब ने एंटर के बजाय पता नहीं क्या दबाया होता था, तो वो मुझे बैठ के मुझे पता लग गया बूढ़ा है ना, तो मैंने बैठ के वो सारे फॉर्मेटिंग की। जैसे हमने भेजा, the book chapter got accepted because अब मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का एक नाम अटैच हो गया ना, तो वो रिलेशनशिप बहुत लंबी गई, अभी भी चल रही है।
अभी भी जिंदा है, और बीच में एक और डॉक्टर साहब भी आ गए. So we ended up actually writing a book together. गपशप में ना वो रिलेशनशिप बन गई, राइट, बिकॉज इट वाज ऑनेस्ट रिलेशनशिप एंड दिस इज हाउ इट सॉर्ट ऑफ वेंट. तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक तो काम शुरू हो गया, दूसरा ये हुआ कि, लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली. स्प्रिंगर वाले एक बुक लिख रहे थे, तो स्प्रिंगर वालों ने मुझे इनविटेशन लेटर भेजा, we would like you to write it. And for me that was a huge big honor कि अब मुझे कोई कह रहा है कि आओ और आप उसमें राइटिंग करो ना, तो वो भी गया, उसमें पब्लिश हुआ. So that was a good scene. अब AGC क्या कहती है इसके? कुछ भी नहीं. Do you get any promotion for writing books and book chapters? Nothing going on, right? So, but that guy put our book chapter on the University of his website, और वहाँ पे जी हमारे प्रोफेसर ने book chapter लिखा है और मेरा नाम भी साथ में था. मैंने कहा लेडी ने भी अपनी वेबसाइट पे चढ़ाया, उसकी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे भी मेरा नाम आ गया. मैंने कह रहे गूगल में डाले तो निकल भी आता है. So very interesting. But what's your goal, right? Are you trying to play that numbers game? Are you trying to do something because you want to create an impact and leave something in the world? And one lady sent an email from Berlin, and she said कि मैं conflict के ऊपर PhD कर रही हूँ और आपका book chapter जो था वो मैंने पढ़ा, and it was tremendously helpful. So I just wanted to say thank you for writing it. And I got most welcome. ये ले copies मेरे कुछ और chapters की भी, maybe you find them useful, right? So it's a feel good one, right? So अब आप सोचिए Q1 भी हैं, Q2s भी हैं, Q3s भी हैं. आप कौन से वाले पे feel good? Is it a numbers game that you are going to shy away from Q4 and sitting around in chapter? Is it that game that you will only do Q1s and do the hell out of it just so that you get promoted and no, self-respect and creating that? So it's something that you need to think about, something that you need to consider. But yeah, generally Q1 and Q2s are considered to be better. Q2s and Q3s are considered to be a bit lower. So examples मैं आपके साथ share करना चाहूँगा कि अब ये Q1s, Q2s हैं क्या? There is an association called the Chartered Association of Business Schools, and this is a clickable link. तो आपके पास जब slides आएंगी तो you should be able to click it. We will click it. So this, I got to know about this Chartered Association for Business Schools in a very curious way. What happened was that our university professor hired किया गया और उसके बहुत ज़्यादा publications थे और अच्छा बंदा था, यहाँ पे निवार किया. और फिर क्या हुआ कि शाम को जब हम 10:30-11 बजे घर जा रहे थे, तो वो बोरिया बिस्तर लेके दफ्तर आ, और सुबह जब फिर हम दफ्तर आ रहे होते थे तो वो लाल लाल आंखें लेके घर जा. तो एक दिन मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, जो कि उस टाइम पे हेड ऑफ स्कूल भी थे, मैंने कहा इसको क्या हो गया ये ऊडी को ना, जब दुनिया सोने जाती है काम करने आ जाता है और जब दुनिया जाग के आती है तो ऊडी घर पे. कहते ऊडी के आपने पेचकस उठा के उसके पेच टाइट. मैं कहा क्या हो? ऊडी की पब्लिकेशंस हैं. मैं तो ऊडी की तो इतनी बड़ा पब्लिकेशन, बट ही हैज नो 3-star and 4-star publications. तो उसको हमने कहा है कि इस साल तुमने 4, 3 या 4-star निकाल के दे दिया और तुम्हारी बुक. तो ऊडी को हमने क्लासों से भी निकाला हुआ है. ऊडी ने पब्लिकेशन करनी है, ऊडी ने नहीं की तो ऊडी इसको. ठीक है. तो जिस दौरान पीएचडी कर रहे थे उस दौरान ऊडी के ऊपर अपनी कयामत बर्पा थी और वो बट ही डिड मैनेज. He managed to come out successful and he moved on from senior lecturer to then professor आजकल उसमें बैठा हुआ है professor. Right? So
what do we want? Right? What are these 4-star and 3 stars, and where do we find them? So do we do it in this way, okay, experiment and make your own mistakes and figure it out, and then बाद में पता लगे कि ये Q1 नहीं था, ये Q2 था, कि नहीं, there is something that's up. तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि there is this CABS, the Chartered Association for Business. So, अपना लैपटॉप ना So see a free app, you go to this website, you should be able to join or you another anyway, we can do research. प्रोफेसर हम सबके साथ वो बाजूड़ मुला वाला काम होके बिल शरीफ कुरान शरीफ की सबक नहीं शुरू I said, yeah, different. So that's the same thing, to be honest, for fine. So you go to that website, the link is there. You go ahead and register yourself, it's free of cost, and then you can go to the Chartered Association of Business Schools. And there you will be able to see a list of the journals that they have. Right? So उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने थोड़ा सा topic wise उस list को categorize किया है. If you are an accounting professor and you want to see accounting के कौन से top journals हैं, तो ये accounting के journals हैं. You see the 4 stars: Accounting Review, Accounting Organization and Society, Journal of Accounting and Economics. Yes, 4 stars. The same exact ranking is there in that ABS journal. Right? So ये दूसरा COB journal list और ये ABS journal list से ही मुतासर होके आई है. So I compared them and they were pretty much the same exact thing. इसमें से कोई change. So these are the accounting disciplines top most journals. And then if you scroll down, it's very long list. It's about 32 pages. इसमें पर human resources का section है, entrepreneurship का section है, project management का section है, and funding analysis. Now, what does it mean कि ये 4 star? It means that based upon certain things they have decided to put it there in the 4 star category. Impact factor को देख रहे हैं. इसके अलावा ये देख रहे हैं कि इनके पास कितने वैरायटी ऑफ प्लेसेस से ये पब्लिकेशंस आ रही हैं. इसके अलावा ये उसकी पेपर की जो अहमियत है उसको देख रहे हैं कि once published, then what happens? You know, are people actually downloading and reading that paper or not? Right? Are people actually citing अपनी जगह पे? लोग उसको पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? Right? So they are looking at these type of things, and based upon that, it's a 4 star. So मतलब ये है कि इसमें publish होना एक अच्छी बात है, because other people are actually going to read your work. In that same accounting discipline, then you are slowly going down, and you are going towards 2 star, and then it's going downward all the way down to 1 star. You will find that the 4 star categorization is a very small list. The 3 star is bigger, and the 1 star is the biggest part of this list. Right? So these are now journals that you can publish. They're not bad journals. It's just that the
rating wise, they are on the low. So how should you approach this? अगर आप publish करना चाहते, should you go for a 4-star, take a chance? Should you go for a 4-star, get it, so 3-star and then get rejected, and then put it in a 2-star and then get rejected, and then try a bunch of 1-stars and eventually get hit? Is that how you go? No, I think if you're going for the 4-star, and if it's rejected, then I think we should work more on that so that it must accept it in a 4-star. Look at the nature of the work. अपने गरीबान में झांक के देखें कि आप नहीं कि कितने काबिल हो, ठीक है, आप कितने पानी में, आपको बस धक्का दे दें और चुल्लू भर पानी में नाक पहुंची हुई है, बस डुबो दें आपको कि नहीं आपको बचा ले, राइट? सो हाउ मच where are you, right? Number 2, look at the work that you have and think about this, right? How much of the world would be interested in knowing कि पेशावर के इंडस्ट्रियल एस्टेट के क्या है, दुनिया कितनी इंतजार में बैठी हुई है कि उसको बताया जाए कि पेशावर के इंडस्ट्रियल एस्टेट के इश्यूज और प्रॉब्लम, बहुत इंतजार. Is that a very important place of business? Is it a budding place of manufacturing that the world cares about? No. So what would happen? Both gap ठीक identified है, research questions अच्छे हैं, methodology बड़ी brilliant है, lit review अच्छा किया है, proper data collection की हुई है, analysis भी बड़ी अच्छी, it will still not make it into the books. The reason being is that the world doesn't care about that, right? So what would be a better avenue for such a publication? A regional journal. A regional journal, because that would be concerned about the region. So that is where it would work. So if you were to go for this 4-star, then start thinking like a 4-star, right? Start thinking about whether the world is going to be interested or not, right? So this is just one example of how journals have been rated, and it's a good list you can get into it. Okay. The other list that is there is the one that I just showed you, as the SCOB ABS list, and it's pretty much the same exact articles that we find in the Chartered Association of Business. There's also the EBSCO Business Source Complete. So this is the EBSCO Business Source Complete. And if you come down here, you are seeing something else. There's a Business Source Ultimate. There's a Business Source Complete. There's a Business Source Premier. And there's a Business Source Elite. It's like being in a gas station and thinking कि premium वाला डालूं क्या बस ये सादा petrol डालूं है, and you have no idea what it means, right? So let's forget about what the premium and ultimate and elite means. Let's just get a sense of what's going on. What is going on here is that basically EBSCO is looking at open source journals, and it is now creating a ranking list of those. So if you want to have a look at journals that fall into that category and you would like to see कि उसके अंदर क्या कहानी चल रही है, so this is where you can head to, and then you can play around, you can click on either of these and see कि इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है. And all you need to do is click on this HTML. Yeah, मुझे चाहिए. Okay, so this is now what's going on in this table है उनका, उसके अंदर क्या है
भाई पब्लिकेशन का नेम क्या है, पब्लिशर कौन है, इंडेक्सिंग किस तारीख पे हुई है, इसका जो फुल टेक्स्ट अवेलेबल है तो कब से अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, अमेरिका से निकला हुआ है, अवेलेबल है अभी ऑनलाइन है कि नहीं है। This is just another way of looking at it. अब क्या करें इसमें, पब्लिकेशन करें कि ना करें, इसकी तरफ जाएं कि ना जाएं, right? So nothing wrong with open source journals. There are some very good journals. There are some journals that are having a good ranking, and but you scratch your chin at it and you say, मुझे पता है 2 नंबर है लेकिन बदल देता हूँ क्योंकि मुझे पर्चों की जरूरत है. So let's go for it. MDPI. You heard of MDPI? MDPI journal, right? भेजते हैं आर्टिकल रीजनेबल सा, बड़ा जल्दी आपको कहेंगे मुबारक खान थैंक यू, मुझसे तो अच्छा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, वही चले पैसे भेजे 2000 अमेरिकन डॉलर्स. You give the money, you get published. You don't give the money, you don't get published. मैं तो बड़े गरीब मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, गुजारा कर देना, सॉरी अफगानियों के साथ गुजारा है तुम्हारे साथ, because Pakistan is apparently not in some particular type of a list कि वो बहुत ही ख़राब हालात नहीं है, तो अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, युगांडा, बर्किना फासो, उनको मिल जाएगा आपको कोई डिस्काउंट है, सो पे आपको. Now you know, now I know already, they know, the HEC knows कि गलत है, लेकिन फिर भी चल. So एक तरीके से मुझे भी पता है, आपको भी पता है, but the numbers gave us still there. So these type of lists will help you to find this type of objects. फिर है आपके पास the web of science. So I'll click on it. Not actually the web of science. This will take us to the Web of Science Groups Master Journal. This is called JCR. Right? Some maintenance is going on it, so but we काम कर रहा था. But here you can put a name of a journal in to see whether it's listed on the JCR or not. ठीक है? Web of Science खुद से बंद हो गई है. I don't know if you happen to work in a big university, maybe the Web of Science works for you there. If it does, so you should be very happy. लेकिन I'm sciences में Web of Science काम नहीं करता है. And like it for you if anybody wants to check to see if it's part of the Web of Science. This. You go there, if this works for you, then your university is providing access to it. Science, if this doesn't open for you, then you don't have. So if we search out a journal here, and it comes out to be there in the JCR, it's now in the journal citation. What does that mean? It simply means nothing. It means this, that this journal is being looked at and its impact factor is being calculated. That's it. Okay? So being in the JCR gives us this perception, this idea that the journal is being looked at and its impact factor is being calculated. Okay? So these are places where you can actually go out nationally and hunt out good journals for yourself so you can have a look at it. Here, find an open source journal, and if you want to check to see if it's got an impact factor, you can plug it in here and see what's the impact factor. So of course you want to work with a higher impact factor because उसके साथ फिर आपका productivity score बढ़ता है and so on and so forth. So impact, right? You will find certain journals not to be there in the JC. There was a journal by the name of Complexity.
I wanted to send an article to it. Again, I didn't want my article to go to waste, so I wrote to the editor and I said, I looked all through your website and I can't see you being indexed in the JCR. Are you in the JCR? Are you planning to be in the JCR? What is going on? Please let me know. If yes, then I will send my article, otherwise then I will. तो उसने मुझे reply किया कि we applied for the JCR and they rejected us. They said that your journal is multidisciplinary and we need to get rid of the multidisciplinary and make it have a singular focus. Only then will they list us on the JCR. But because we're dealing with complexity, which is multidisciplinary, so it really kills the philosophy of this journal and what this journal wants to achieve. So as a matter of principle, we have decided not to be listed. तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छी बात है जो मैं प्रोफेसर बन जाऊं फिर आर्टिकल भेजूंगा लेकिन अभी तो मैंने नंबर्स गेम खेलनी है तो थैंक यू आई विल send it somewhere else and this is what I did. I sent it somewhere else. Right? So a good journal, but you and I are now being prevented from being published in it because of the politics of the game, right? So ye bhi aap soch. Next then we have another monster which is the localized. Localized mein jaane se pehle let's familiarize ourselves with the categorization mechanism here. And here's the categorization mechanism. We've got W, X, Y, and there used to be a Z. I don't know what happened, right? So I don't think the Z is there anymore. So we are left with at least the W, X, and Y. कोई mentality हमारी आगे कौन पीछे कौन, right? Number one point. If you go to the HEC's website and look up the idea behind what W is, so here's the idea. W are those that are listed in the JCR, Journal Citation Record, Web of Science. काफी time तक only JCR was done. अभी भी only JCR वाला है. तो भाई एक तो नहीं है ना इम्पैक्ट फैक्टर जो कि कैलकुलेट करे 6 एजेंसीज हैं जो कि इम्पैक्ट फैक्टर करे ये इसमें क्या सुख आपके पर लगे हुए हैं कि दिस क्लेरवेट इज द वन दैट इज बीइंग फॉलोड तो कुछ गेम चल रही है which you and I don't know about, right? You and I don't know about, right? So कोई गेम चल रही है but yeah. Then we've got X category. X category क्या गेम है? These are journals that are the ones that we use focus for stick करें, the ones that are there on the web of science, which is actually the web of knowledge, right? So that's a very strange terminology. काफी अरसे तक it was only those would be X that were on the web of science. फिर हमने कुछ लेटरबाजियां की हमने कहा जरा स्कोपस की भी कोई अहमियत होती है इस दुनिया में आप लोग जरा इसको भी कंसीडर कर लें तो फिर एक डॉक्यूमेंट आया उस पे कमेंट्स मांगे गए फिर हमने उसमें स्कोपस वाला जिक्र करके दिया तो they listened, right? Which is quite a good thing. Now next category includes those journals that are either on the web of science or on the scopus, right? So ये क्या है ये आपके X or verified by the HEC as meeting their defined journal criteria. अब ये क्या मतलब है? तो you can look at the PIDE journal. PDR जो है is not in JCR. PDR is not on Web of Science, but the PDR is X. A global journal. Why is it X? Because the HEC is now facing the political pressure from the Ministry of Finance and Economics. ये उनका जर्नल है भाई पैसे कहाँ से आ रहे तो मालिक को तो आप ही नहीं कहोगे ना तो आप फिर अपना क्राइटेरिया के मुताबिक उसको right so it's now a X. आप कौन सा कह रहे थे भाई ग्लोबल नाम एक जर्नल है सर ग्लोबल बिजनेस रिव्यू या इस्लामाबाद है वो कोई वैसे ही यूनिवर्सिटी या किसी
गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएटेड नहीं है, कोई प्राइवेट किस्म का जर्नल है, ठीक है, और $1800 वो ले रहा है एक पेपर पब्लिश करने को। और अगर आप उसके अंदर से कोई और चीज़ें, मैं नहीं गया लेकिन रेफरेंस लिस्ट है मैंने उसकी देखी, और द रेफरेंस वर ऑन डिफरेंट स्टाइल, ठीक है, एक्स कैटेगरी। ठीक है। सो एक्स कैटेगरी है, बस आप लोग आपस में पैसे डिवाइड कर ले, कुछ यूनिवर्सिटी दे देगी, थोड़ा सा जेब से डाल लेंगे, आपका एक एक पर्चा हो जाएगा ना। सो ग्लोबल में आप आ जाए, एंड देयर मस्ट बी सो मेनी अदर्स जो के हम एक महीने से सब मिल रहे हैं। तो ये आपकी एक्स का ये हिसाब, इसको फिर हम जरा को देखते हैं कि व्हाट इज दिस एचईसी's क्राइटेरिया, उसको भी मैं and there is the Y category journal, और ये बड़ा unfortunate barzakh है, there's purgatory, not here, not there, right? X is basically the Y journals are basically the same as X, but they are missing one criteria, which is they are not undergoing a review by one expert from an academically advanced firm. लेकिन अब situation ऐसे है कि there are Ys that are actually going through a local review and a foreign review, लेकिन they are still in Y because 2 साल supposedly गुजरेंगे, तो तब वो 2 साल भी गुजर गए हैं, but they are still in Y, right? So there must be some politics going on there as well, which we don't know, right? But hopefully one day these Ys will become X's. For some odd reason, the Thomson Clairvaux does not take Pakistani journals into the JCR. तो ये क्या मसला है, और कुछ चल रहा होगा। अच्छा, Z जो थे ये हुआ करते थे, possibly ये PhD students वगैरह के लिए यूज हो रहे थे, जो कि उसमें चले जाते तो that's perfectly fine। इसके अलावा ये बहुत ही पेचीदा किस्म के कुछ इश्यूज के ऊपर जर्नल्स थे, फॉर एग्जांपल सिंधी का जर्नल, फॉर एग्जांपल बलोची लैंग्वेज के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, तो देयर वर लैंग्वेजेस जर्नल्स, राइट, और वो इतनी निच मार्केट को टारगेट कर रहे हैं कि पॉसिबली देयर इज नो डब्ल्यू फॉर इट इन दिस दैट, तो उनके लिए ये था कि वो इसमें अगर वो पब्लिश कर लेता है ना, तो इट इज एज गुड एज बीइंग इन एक्स कैटेगरी। सो दीस आर बेसिकली द लोकलाइज्ड कैटेगराइजेशन schemes. There is no Pakistani journal which is internationally recognized. So there is one medical journal from the Khan University in Karachi, which happens to be published in collaboration with Xavier. मेडिकल में है सर, मेडिकल में और भी Okay. Only मेडिकल में हमारे पास What I don't think that मैं आपको तरीका भी दिखा दूंगा कि आप don't कैसे सकते हैं, so we'll have a look. सर कुछ एप्स थे जिनको वाई में करते हो। ज्यादातर मैडम आजकल Y है। हमारा अपना जर्नल जो था वो X हुआ करता था, जब वो उसको बल्कि मैंने ऐसा कौन सबको उठा के Y। अब प्रॉब्लम ये हुई ना कि एक तारीख तक उसमें आप पब्लिश कर लेते तो X काउंट हो रहा था, तो जिन लोगों की प्रमोशंस करीब थी उन्होंने उठा के अपने यार दोस्तों के साथ तो पदे औकम के वाले जबरदस्ती के बारे में ये करके जो सारे प्रोफेसर, उसके बाद जो आए हैं उनके लिए अब वो दरवाजा बंद हो गया क्योंकि वो तारीख गुजर चुकी है, तो अब वो बेचारे क्या करें, तो अब वो वही जर्नल है वो Y में गया हुआ है, so those people are unable to publish in those. Now those journals are unfortunately struggling because they're not getting good quality publications coming from people. क्यों डालें इसमें, तो वो आप उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे कि वो गलतियां करता, सीखता, अपने आप को इम्प्रूव करता, सिलेक्टिविटी लेके आता। तो देखें जब भी एक स्टिमुला इंसर्ट कर दिया जाता है ना एक नेचुरल प्रोसेस में, तो इमरजेंस होती है और बड़ी अजीब सी भयानक सी चीजें निकल आती हैं। तो वो भयानकपन हमारे पास आ गया बिकॉज आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसको नेचुरल इमरजेंस करने के लिए छोड़ते तो मे बी समथिंग innovative, beautiful could have come out. So there's some doctrine. So anyway, this is the XYZ categorization. Now here's the criteria, HEC's criteria. A journal
ये मेरा नहीं है, अच्छा ये HEC की वेबसाइट. A journal should be regularly published. So if it's a monthly, it should be published monthly. If it's quarterly, it should come out quarterly. If it's biannual, it should come out biannual. Number two, they say that it should have a diverse editorial board. And by diverse, they mean that more than 50% at least should be local, 50% should be foreign. For some odd reason, they would like more foreign. Okay? It should follow a peer review process. Is good. It should follow a blind peer review, a double blind peer review. Right? So blind peer review and double blind. Oh, yeah, I can. Blind peer review ये है कि आपको नहीं पता कि आपका आर्टिकल किसके. डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू ये है कि उसको भी नहीं पता कि किसका आया. So this is going on. So one local and one international from technologically advanced countries. उसकी पर लिस्ट है कि technologically advanced ones. So you see, when you come up with strange rules, then you have to come up with strange classification. So there is a list of technologically advanced countries. उसमें फिर मैं आपको एक फर्दर बता दूं कि हर technologically advanced country को पैसे भेजना भी possible. पुर्तगाल पैसे भेजना impossible तो नहीं है, लेकिन बहुत difficult है. स्टेट बैंक प्रोसेस नहीं करता. तो पुर्तगाल का अगर आपके पास रिव्यूअर पैनल पे आ गया और अब आपने उसको करना है, तो फिर आप उसको कहेंगे क्या तुम्हारा कोई दोस्त है बर्तानिया में जिसको पैसे भेजो करो उससे, because you won't be able to pay that. Non-English journals must present also an abstract in English as well. And the last is that references must follow international standards. Hopefully, APA style, IEEE, numbered, या Harvard, या Chicago, या MLA, या कोई style. ये आप पढ़ लें. So this is the definition of a HEC acceptable journal according to the higher education commission. Right? So I don't think we should have any questions about it. So now that number here follows. Here's the number here going nice. In the JCR, they are now giving medallions. देखें हम तो तालीम में भी स्पोर्ट्स का काम करते हैं ना. आपने जी BBA किया है, गोल्ड मेडलिस्ट. आपने MS किया है, उसमें भी आपको गोल्ड. और आपने PhD किया, उसमें भी हम आपको तमगे पहना है. तो अब आप जर्नल्स की रैंकिंग भी कर गए, WXY में भी ले गए, और अब आप उनको तमगे भी पहना. So here are the तमगे that I gave put in the neck of these journals: platinum, gold, silver, bronze, honorable mention, and killing. To be honest, when I first saw this on the JCR, मैं ये कर रहा था कि इससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. और फिर हमारी एक कुलीग थी, उसका आर्टिकल भी पब्लिश हुआ, मेरा भी पब्लिश हुआ. तो फिर वो नहीं होता है कि आपस में वो मुकाबला हुआ ना. तो मैं कहा जमा खैर आर्टिकल शेयर करा एक्स कैटेगरी. तो कहती है कौन से है, क्या मतलब है कौन से बनाने जर्नल में. नहीं उसका मेडालियन कौन सा है. मैं कहा मेरे वाले का मेडालियन जो था ऑनरेबल मेंशन. कहती है मैंने किया प्लैटिनम. फिर मैंने खराब कर दिया. तो I wondered कि ये क्या है. Is her article now journal suddenly much better than the journal that I went into? Motion में ये कैसे count होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Both the things get equivalent value. So what's the story here? This took me a while to figure out, but basically अजीब सी कोई एक साइंस. साइंस ये है कि प्लैटिनम का मतलब ये है मेरी जान. Platinum means that this journal will remain as done. There is no possibility in the future of it following down from W into X. Clay का मतलब ये है कि इसके W बनने के कोई इम्कान नहीं. तो अब कौन है ये लोग जो कि ये
फ्यूचर परफेक्ट हो के बता रहे हैं कि दिस विल नेवर कम डाउन एंड दिस विल नेवर गो अप। एंड इमेजिन इन्होंने जो जर्नल्स वालों ने बील के साथ जो किया ना, अली साहब ने कहा ना कि 2017 तक बील काम कर रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। बील की जो इन्होंने बैंड बजाई है ना, इसलिए बील जो है वो भाग गया। बील के ऊपर 14 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर का लॉसूट किया गया। बील के ऊपर सीज एंड डिसिस्ट के ऑर्डर्स इशू कराए गए कि तुम हमारे जर्नल्स की बदनामी कर रहे हो। लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, और बील बेचारा तो एक मामूली सा लाइब्रेरियन था जो कि एज अ हॉबी ये बताता था कि ये बकवास है और ये अच्छा है और ये फलाना है। उसको जब वो फाइनेंशियल धचके मिले ना, तो बील ने कहा वो गायब हो गया। तो अभी वही सीन है उसका, वो आर्काइव रखा हुआ है, वो अभी भी उसको यूज कर रहा है कि यार ये एक बील भी था वो वाली। तो द आइडिया है कि क्ले कभी ऊपर नहीं जाएगा, प्लैटिनम कभी नीचे नहीं आएगा। इनको पता लगा ना कि किसी ने ये किया हुआ है और हमें क्ले दिया हुआ है, फिर वो आके जब फाइनेंशियल लॉ सूट करेंगे ना, तो फिर HEC अपना फिर दिमाग चेंज कर लेगा कि मैं ये कैटेगराइजेशन रखना चाह रहा हूँ कि ये फर्दर जो क्लासिफिकेशन उसने की है उसको वो हटाना चाहता है। सो दिस इज so now we've got the HJRS. We have all hopefully seen it. This is the HJRS, right? You can read about things, you can go to the FAQs. There you will find furthermore interesting anomalies. किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो प्रमोशन का क्या होगा? तो कहते हैं भाई प्रमोशन के जो इश्यूज है वो बनाने हैं, लोगों से डिस्कस करो। हमने तो सिंपली एक सिस्टम बना के दिया। So is this system a system for promotion use, or is it not for promotion? Should your university come up with its own thing? And strange issues. There's a journal by the name of Buildings. Okay? And it's published by MDPI. It happens to be a W category. It happens to have a medallion somewhere as well. Bronze and stuff. Okay? It's now categorized under engineering. Old days, W, engineering W. बस आपने W कर लिया, it was W. अब आपने W किया, अब आपके साथ क्या किया जाए? Should we consider this as W and say कि अच्छा फाइनेंस का बंदा था, उसने बिल्डिंग फाइनेंस के ऊपर कुछ कर लिया तो W, कि नहीं अब हम उसको कहेंगे ना करें जी ये जो है ना आपने तो इंजीनियरिंग का W कर लिया ना, आप तो इंजीनियरिंग के बंदे नहीं थे ना, आप तो फाइनेंस के थे ना, तो ये अब मैं काउंट करूं इसको कि मैं काउंट ना करूं? If we search more here, we'll find that one journal is X for social science and it is Z for somebody else, or Y for somebody else. One is W for one person and it's Y for another. So there are very strange anomalies. Okay. So this is the HJRS system, and ये बटन काफी important है। Keep this in mind. Okay. Are you looking at it? If you're putting your case up and you go in here and you find ये तो Z है या ये तो non-existed हो गया है और आपके ऊपर पसीने आए, तो आप पहले ये देखें कि what year had you published in it, and then pick that up, and so it may be a W before and it may be a Y. साथ साथ में इसको भी आप देख लीजिए, ये तारीख देखें 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई पे ये लिस्ट एक्सपायर हो जाती है। आज देखें 21 जुलाई हो गई है, नई लिस्ट तो अभी तक नहीं। तो अब आप मुझे बताएं ना, when should you stop putting up your articles into the journals? For a good journal, shall you stop in March? Shall you stop in January and then wait कि यकम के बाद क्या होता है? So it's creating strange issues, but at the same time आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मेडालियंस का कॉन्सेप्ट वापस ले आए। If it's
platinum or if it's one of those higher medallions, safe to say it will remain on that list even after the switch happens of the date. So try to choose better ones. Desperation में है तो फिर pace yourself. Right? जैसी नई list निकले, find the articles, find the journals. Okay? आखिरी चीज है. So this years to hand, they are only mentioning 2-3 years to go. जी जी अभी अब decide है ना. इससे पहले नहीं. July 2020 ये effective. If you go backwards, then you simply go by the WXY और उसकी notifications आप निकालेंगे. तो फिर उसको होगा. पूरी गलियों के साथ करार करें आप. 19 का आ रहा था पहले एक्सपीरियंस लास्ट ईयर तक. अच्छा आप क्लिक कर सकते हैं. देखिए आप इधर आए. इसमें हम गए डिसिप्लिन वाइज सर्च में. You want to look at management sciences, which is not the right term. It should be management, right? Yes, sir. Accounting, operation research. And then you can say, okay, show me next category. इसमें सबसे नीचे चले जाओ. ठीक है, ये सबसे बेकार. ठीक है, बस इसमें पोस्ट पेपर. इसमें तो सारे ऑनरेबल मेंशंस हैं. बस आपको क्या परवाह है भाई. आपको आर्टिकल नंबर की बस जरा इंतजार करो जब नई लिस्ट निकल आए. राइट, जैसे ही निकले डिसिप्लिन वाइज सर्च मैनेजमेंट जाके है तो फिर सबसे आखिरी को पकड़े उस भाई को पर्चे भेजना शुरू कर दें. वो रिजेक्ट करता है, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, इसी पेज में शुरू हो जाओ. अपनी नंबर गेम पूरी कर. ठीक है, सॉरी टू से पूरी करें नंबर गेम. उसके बाद फिर आपने जो अच्छे अच्छे काम करे वो तो बस ले में रहेगा. तो रहे ना यार, तुम तो प्रमोट हो जाओगे ना. You'll be get out of the clay. You see there's penalties if you spend too much time as an assistant professor TTS पे अगर आप आ गए and you don't move up, आपके ऊपर एक जर्नल इजाफी हो जाएगा. वो नहीं किया तो एक और इजाफी हो जाएगा. वो नहीं होगा तो फिर आपको PM लेके उठा के आपको BTS पे फेंक दिया जाएगा. So there's very strange type of things going on. So why do you want to put yourself in those problems? The number game is there, play it as quickly as possible and do good works. Right? ये कहानी थी जनरल क्लासिफिकेशन की. थोड़ा सा लोकल, थोड़ा सा वो. आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि वो जो ड्राफ्ट का मैंने आपको मेंशन किया कि there happens to be some sort of a draft hanging around. मैंने जल्दबाजी में कर दिया था. But there's a draft going on, and that also looks at basically the categorization of books as well. तो जिस तरह WXY की कैटेगरी है उस तरह से B, C और D की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है बुक्स के लिए. तो वो ड्राफ्ट में आप मैडम को भेज दूंगा. उसमें एक लिंक है, बल्कि वो लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. So if you click on it, it's some person in Holland, some entity in Holland which is ranking different publishers. तो जो नया ड्राफ्ट है वो ये करना चाह रहा है कि अगर आप कोई बुक चैप्टर लिख लेते हैं तो उसकी आपको फिर कोई पॉइंट्स या स्कोर मिलेगा. तो आपको कितना स्कोर मिले तो उधर आप फिर अपने आप को सर्च कर सकते हैं कि आपने किस इंफॉर्मेशन है कि अभी जो JRS है वो 6 पॉइंट्स मेन पॉइंट है जिस पे वो काम करें. इनको कहते हैं जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स JPI. उसके स्कोर्स हैं. उन स्कोर्स के बेस पे वो X, Y और W कैटेगरीज को. लेकिन उसका स्कोर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है. इसी में एक जर्नल में एक का स्कोर है 35 फॉर W कैटेगरी में और दूसरी कैटेगरी में उसका स्कोर JP जो 6 पैरामीटर्स को देते हैं उसका स्कोर है 42, लेकिन वो Y कैटेगरी में. जी, तो मैंने आपको जिक्र किया ना कि आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो W निकल रहा होगा. सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो X निकल रहा होगा या उलट निकल रहा होगा.
आप देखोगे तो इंजीनियरिंग की कैटेगरी में वो वाई होगा और किसी और कैटेगरी में एक्स होगा। तो जितना नो हाउ इस एजीआरएस के ऊपर पड़ा है बस दैट्स ऑल यू। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ये कौन सी कमेटी है, कौन सा टेक्निकल पैनल है। पाकिस्तान उनका अभी तक वो जो आप सर्च करते हैं तो उसमें इनका जो जेपीई का स्कोर है वो नहीं दिया। जी वो नहीं दिया, मतलब वो देश लगा हुआ है इंटरनेशनल एंड जेपीई का स्कोर, क्योंकि वो डिस्कस कर रहे हैं। Thank you, sir. Very informative session. Thank you so much, sir. और कुछ जर्नल्स ऐसे हैं सॉरी जो कि जेसीआर में हैं, इंडेक्स भी हैं, लेकिन वो इस एजीआरएस में नहीं। अब आपने उसमें पब्लिश कर लिया तो अब आपने गलत कर लिया क्योंकि एजीआरएस में नहीं है। तो मेक श्योर आप अपने लिए कोई नया मकाम या महाज ना खड़ा कर ले। One of our colleagues did this. He published in a journal which was in the Web of Science, but it was not on the HGRS. तो फिर जब हमने एचईसी के साथ रब्ता किया कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तो एचईसी ने कहा कि ऐसे केसेस में आप पहले हमें बताएंगे कि वो जर्नल है, फिर उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर अगर हमने उसको एचजीआरएस में डाल दिया ना तो फिर आप तो अब कौन इतना इंतजार करेगा कि आए फिर या कम तारीख तो बेहतर क्या यही है कि बस इसमें ढूंढो और जो मैंने आपको बताया ना सब। और कोई सवाल, कोई कमेंट? Thank you, sir. Very informative. बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग। आप कल भी हमारे साथ हैं सर। हाँ कल है ना Sir, number. In the situation when we contact, in the situation when we contact. So let's start the morning, sir. मर खबर इससे